So everyone, welcome to a new session. आमर ज्योग्राफी रो गोटे बेसिक आइडिया ऊपर आम डिस्कसन करूछंती. सो आज आमर डिस्कसन रहिबो सिलेबस डिटेल्स रे आम डिस्कसन करबा. वर्ल्ड ज्योग्राफी रो सिलेबस डिस्कस करि सारिथिले. आज रो डिस्कसन रहिबो इंडियन ज्योग्राफी. जते बेले भी आम एग्जामिनेशन जाउछंती, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सेंट्रल लेवल रे एसएससी हो कि स्टेट लेवल रे ओएसएससी हो या फिर आमर टीचिंग लेवल रो जहां भी एग्जामिनेशन अछि, सब एग्जाम रे ज्योग्राफी टॉपिक आज जीएस हमर मेंशन करा हेछि. सो आग जेतले हम एग्जाम को जिबा, दैट मींस हम माइंड रे गोटे आइडिया थिबा दरकार जे व्हाट इज द सिलेबस एंड सेक्शन वाइज सिलेबस रो कंटेंट कोन रहिबो. आज हमर डिस्कशन रहिबो. स्पेशलिटी कहा ऊपर रहिबो ना, इंडियन ज्योग्राफी रो सिलेबस हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करबा. कोन कोन चैप्टर अछि एंड जो चैप्टर अछि से चैप्टर रो सब टॉपिक को भी टिके टिके एनालिसिस करबा. आम माइंड रे गोटे व्यू आसी जिवो जे जतले हमें एग्जाम को जिबा या फिर जो भी एग्जामिनेशन हो, जो भी एग्जामिनेशन जतले तुम सिलेबस उठैबो, ओवरऑल सब टॉपिक रो नाम लिखि देबी. सेते बेले तमे टीचिंग एग्जामिनेशन देबो. टीचिंग एग्जाम रे जहां भी तमरो सिलेबस लिखा आइछि से टॉपिक को तुम पढ़ियार अछि. जो एग्जाम आसीबो से एग्जाम पई तुम कोन करियार अछि ना, कंटेंट बाहर करी पढ़िबार अछि. बट मु ओवरऑल आइडिया ज्योग्राफी रे दे देबे. आउटसाइड ऑफ दैट कोठो भी क्वेश्चन पचारिबोनी. सो स्टार्ट करबा. यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1. yes or no? So you can see here that is the chapter 1. just a second. This is all about your Indian geography and this is the chapter 1. This is the chapter number 1. Clear? So chapter number 1, chapter ro naam मन रखिबो. That is all about your first chapter is the physiography of India. What is that one? Physiography of India. Clear? Physiography of India. But before you can see the physiography of India, what is the chapter हमें देखिबा. but के माइंड रे आइडिया आनिबा. what is India sir? what is India sir? India हम देश. that means this, okay, this is a piece of land. yes or no? बहुत पिला को लागु थो नाही सर piece of land नाही हम. ओके हमें सेठी रहू छु, हमर इमोशन जोड़ी है कि अछि. that means it is a land. yes or no? it is a land. so जेमती तमर निजर गोटे लैंड अछि, तम निजर घर अछि. yes or no? that means तम गोटे स्पेसिफिक लोकेशन रे रहू छ. सिमिलरली जोटा कि इंडिया भीतर आसुची एंड इंडिया जोटा कि हमर कंट्री बुझेला. that means India, that is a piece of land and तार ज्योग्राफिकल कोन अछि ना सर, हमें कहि परबा ज्योग्राफिकल एक्जिस्टेंस अछि. that means हम जदी मैपिंग बनेबा, you can see here this is the map of India. This is the map of India. yes or no? ठीक है, तेरछा हो जाय छी बिल्कुल. तक हमें सीधा कर दबा. so this is the India. clear? so this is the India. you can see here this is the piece of land, this is the India and this is the geography of India. India रा geography हमें पढ़िबा. and first chapter होची physiography of India. that means geography रे हमें तीनटा जिंस जानि छथि सर. geography deals with three things. okay, तीनटा टॉपिक सहित से डील करे सर. that is the land, that is the land, that is the water, that is the water and that is the air, that is the air. that means sir geography तीनटा टॉपिक सहित डील करे. बट एबे हमें कथा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो सिलेबस रो फर्स्ट चैप्टर अछि से कहा सहित डील हबो सर. लैंड सहित डील करिवो ना, वाटर सहित डील करिवो ना, एयर सहित डील करिवो. दैट इन द सेंस हमें डिफाइन करि परथवा दरकार. फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया रे हमें कहा विषय रे पढिबा सर. वाटर विषय रे पढिबार नाही सर. एयर विषय रे पढिबार नाही. का विषय रे पढियार अछि? दैट मींस लैंड डिवीजन ऑफ इंडिया. दैट मींस इंडिया रे जो लैंड डिवीजन अछि, दैट इज ऑल अबाउट योर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. जतले मु ओडिसा रा तुमको सिलेबस कहबी, फिजियोग्राफी ऑफ ओडिसा कहबी, दैट मींस तमनकर माइंड रे
is all about your kana na sir land division of Odisha. So land, that is the basic idea. Mind रे गोटे clarity आसी sir land माने कौन land रो division हमें पढ़िबा. That means sir हमें land बनेइबा. You can see here, that is your land. You can see that is the part. You can see here, this is the land. This is the land start होची. Yes or no? गोटे particular height रे अछि. तापरे गोटे particular height जाउची. Clear? So this is the land structure. This is the land structure. Clear? This is the land structure. And ए जगह रे हमको मिलिबो ना oceans मिलि जिवो. ए जगह को मिलि जिवो ना oceans मिलि जिवो. Sir that means sir land रो गोटे height आसीबो. First point clarity आसिया दरकार. That means sir land रो गोटे height आसीबो. You can see here, this is the height up to 300 meter. Up to 300 meter and continuously ए जो height अछि from the sea level. This is the sea. From the sea level जदि height हमको 300 meter रे मिलिबो, that means continuously same कण ना altitude रे या फिर हमें कहबा same height रे गोटे land मिलुची, ताकू हमें कोन कहबा ना, ताकू हमें plain area कहबा. कोन कहबा? ताकू हमें plain area कहबा. Clear? Then sir ता पाखो part जो अछि तार height टिके अधिक अछि. तार height टिके अधिक अछि. So केते height जाय अछि ना up to 600 meter. Up to 600 meter. आर height जतले बढ़ुची से एरिया को प्लेन एरिया अप टू 300 मीटर सी लेवल टू आमे फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड डिवीजन कहि परिबा. सर तापरे हाइट टिके अधिक होउछ अप टू 600 मीटर जतले हाइट मिलुची ताको आमे प्लेटू एरिया कहउचंदी. कोन कहउचंदी? प्लेटू एरिया कहउचंदी. क्लियर? ताको आमे कोन कहउचंदी ना प्लेटू एरिया कहउचंदी. तापरे सर ओके अबव द 600 मीटर 6000 मीटर हे पारे 8000 मीटर हे पारे जतले हाइट बहुत अधिक होई जिवो, दैट मींस ताको आमे सर माउंटेन कहबा. कोन कहबा ना, ताको हमें माउंटेन कहबा. कोन कहबा ना सर, ताको हमें माउंटेन कहबा. दैट इन द पॉइंट हमें कहउचंती लैंड रो तीनटा स्ट्रक्चर देखि परचंती विथ रिस्पेक्ट टू हाइट. ओके माने कहा सहित इंटरलिंक होचंती ना विथ रिस्पेक्ट टू हाइट. With respect to height, that means sir lowland area, sir plain area. बुझेला? प्लेन एरिया टू टिके हाइट मिलिबो अप टू 600 मीटर तक हमें प्लेटू रीजन कहबा. थर्ड रे क्या आसीबो ना माउंटेन एरिया में कहबा. मोर देन 600 मीटर हाइट रे जो हमरा लैंड मास मिलिबो ताकू हमें माउंटेन रीजन कहबा. यस और नो? ता माने हमकु तो तीनटा एरिया मिलि जाउची फिजियोग्राफी ऑफ लैंड रे बेसिक डिवीजन. ओके बेसिक आईडिया लैंड सहित हमें इंटरलिंक करछन. तापरे इंडिया रो फिजियोग्राफी हमें देखिबा. बट ए जो इंडिया रो फिजियोग्राफी अछि ए चैप्टर को कहा जाय फादर ऑफ all the chapters of Indian geography. It is the fathers of. Okay, just a second. ठीक है, इरेज करके बल से लिख दबा. It is the chapter. It is the father of all the chapters of Indian geography. एटा मोर कॉन्सेप्ट बुझेला. तम भाविबन जे सर कहिचंदी एंड तमे टेक्स्ट बुक रे खोजिबा स्टार्ट करबो. फादर ऑफ ऑल द चैप्टर्स, दैट मींस ए जो चैप्टर अछि ए चैप्टर रु हमें सब चैप्टर को इंटरलिंक करि परिबा. कोन करि परिबा ना इंटरलिंक करि परिबा. केमति करबा आगु को हमें देखिबा. बट लैंड रो बेसिक डिवीजन कोन देखिले ना सर, माउंटेन देखिले, प्लेटो देखिले एंड प्लेन एरिया देखिले. सिमिलरली हमें कहि परिबा इठी सी अछि. सी पाखा पाखी जो एरिया अछंती, सी पाखा पाखी जो एरिया अछंती, दिस एरिया बुझला. दिस एरिया जोटा कि सी कोस्ट पाखे रे अछंती ताको कोन को जाय ना कोस्ट लाइन को जाय. ताको कोन को जाय ना कोस्ट लाइन को जाय. कोन को जाय ना कोस्ट लाइन को जाय. क्लियर? सिमिलरली सर एपटे सी अछंती, दैट मींस हमको किछ प्लेस मिलिबो, किछ लैंड मास मिलिबो जोडा कि पूरा सी भीतर थिबो. माने से लैंड मास चारि पटे हमको वाटर मिलिबो. यू कैन सी हियर, these are the regions. You can see here, these are the regions. These are the regions. These are the regions. जार चारिपटे हमको
सी मिलुची जैसा नो ताको हमें कौन कहबा ना सर ताको हमें आइलैंड्स कहबा कौन कहबा ना सर ताको हमें आइलैंड्स कहबा सो दीज आर द एरिया जहाँ को हमें कौन मेंशन करबा ना सर आइलैंड्स कौन कहबा ना आइलैंड्स कहबा बुझला दैट मींस हमर पॉइंट मिल जाउची कौन कौन ना सर फर्स्ट डिवीजन दैट इज द हिमालय माउंट हिमालय इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू रे नेक्स्ट वन प्लेन एरिया दैट इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स दैट इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स थर्ड रे प्लेटू एरिया दैट इज द पेनिनसुला इंडिया पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया यस और नो फोर्थ रे दैट इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया दैट इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया and fifth ray that is the islands of India that is the islands of India clear you have a clear cut idea all about your physiography जोटा कि हमें डिटेल्स रे पढिबा बट एठी गोटे आईडिया तो ब्रीफली आसी गला सो से पॉइंट आउट हमें करि नबा से पॉइंट आउट हमें मेंशन कर दबा सो यू कैन सी हियर फिजियोग्राफी रे कोन कोन आसी जिवो सो फिजियोग्राफी रे यू कैन सी हियर दैट इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया रे सिलेबस रो डिटेल्स एनालिसिस देखुचंदे तमे जो भी एग्जाम जाओ सबुथिरे बेनिफिट हबा आगो ए जो चैप्टर अछि या फिर ए जो क्लास हमें करूचंदे क्लास को भल से माइंड रे मैप बनाओ एंड लिखि भी चलो जहां भी मु नोट कर सो फाइव टाइप्स रो डिवीजन फर्स्ट वन हबो द ग्रेट हिमालय सेकंड रे आसीबो the North Indian plains third रे आसीबो the peninsula India fourth रे आसीबो the coastal plain and fifth रे आसी जिवो the islands clear so you have a clear cut idea about your chapter number 1 then coming to the chapter number 2 hame jiba you can see here that is the chapter number 2 so coming to the chapter number 2 what is the chapter 2 so chapter number 2 ro na kon achi na that is all about the river system what is the chapter number 2 the river system that means केते सारा बुक रे the drainage system बोली भी लिखा जाता है कौन लिखा जाता है that is the drainage system बुझला what is drainage system okay what is drainage system जदि हम देखिबा करंट पड़ेला कि आसे गला ओके ठीक अछि सो drainage system in the sense हमें कहि पारे rivers तो important river with connecting to the physiography of India बिल्कुल सर physiography of India आपण कहितिले कनेक्ट हबो कि नाही सो physiography of India को कनेक्ट जदि करिबा हमर दीटा कैरेक्टर नबा जो हमर पांचटा डिवीजन थिला गोटे थिला द माउंट हिमालय गोटे थिला पेनिनसुला कोन इंडिया दैट मींस दैट जोठी हमर हाइट रहिबो से जगह रो रिवर स्टार्ट होती सिमिलरली ज्योग्राफिकल बेसिस रे फिजियोग्राफी बेसिस रे जदि हमें इंटरलिंक करिबा इंडिया रे टू टाइप्स ऑफ हमको रिवर मिलिबो कोन मिलिबो ना सर फर्स्ट वन होची हिमालय रिवर सिस्टम फर्स्ट वन होची हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सेकंड वन होची पेनिनसुला रिवर सिस्टम कोन पेनिनसुला रिवर
रिवर सिस्टम क्लियर सो दैट इज द पार्ट जता हम टॉपिक पढिबा दैट मींस हम माइंड रे क्लैरिटी आसी गला चैप्टर नाम मन रहिला सबसेक्शन भी हमें जानले हिमालय रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुला रिवर सिस्टम एति की आईडिया क्लैरिटी आस जाउची दैट मींस जति हम एटी भी आउट टिके क्लैरिफाई करबा डिटेल्स रे तो टॉपिक पढिला बेले पढिया बट एठू टिके स्ट्रांग आईडिया को डेवलप करके नै कि जिबा जोठी कि आगु जदो टॉपिक पढिबा एठू हम माइंड रे पूरा सब्जेक्ट थिबो सब टॉपिक थिबो एंड तार लॉजिकली किछि ना किछि हम पाखरे आईडिया थिबा दरकार सो यू कैन सी हियर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमें कोन करबा ना सर हिमालय रिवर सिस्टम ताकू इन अदर हैंड कोन कोआ जाय ना पेनिनसुला रिवर सिस्टम बोली भी कोआ जाय कोन कोआ जाय ना पेनिनसुला रिवर सिस्टम बोली भी कोआ जाय सो कोन कोआ जाय दैट इज आल्सो नोन एज द sorry that is also known as not peninsula perennial rivers कौन को जाए ना perennial river को जाए कौन को जाए you can see here that is the perennial rivers बोली को जाए that means जता सर माउंटेन अछि माउंटेन रो सर गोटे हाइट अछि जतले हाइट अधिक होई जिवो that means सर रेनफॉल तो हबो फर्स्ट दिन सर रेनफॉल तो रहिबो इन सेकंड जिंस सर अधिक हाइट हेले वाटर कोन हे जीवो ना सर आइस फॉर्मेट रे रहबो जा को हम कोन पे ग्लेशियर्स मिल जीवो कोन मिल जीवो ना ग्लेशियर्स मिल जीवो सेत पई कोन को जाय ना हिमालय रिवर सिस्टम को दैट इज द पेरेनियल रिवर सिस्टम ऑल ओवर द ईयर एठी तमको कोन मिलिबो ना वाटर मिलिबो ऑल ओवर द ईयर एठी तमको वाटर मिलिबो सो यू कैन सी हियर these are the part water available here all over the year clear all over the year एटी कोन हबो ना वाटर तुमको मिलिबो सो ए आईडिया रे गोटे क्लैरिटी आस जाउची कि तम मानकर गोटे कांसेप्ट क्लैरिटी आस जाउची चलो ठीक अछि बहुत बढ़िया next one you can see here that is all about peninsular river that means height is less peninsula india ro height कोन हबो ना लेस मिलिबो सर height is less height less अछि that means हमको only water मिलिबो कोथरे ना रेनी सीजन रे that means indian monsoon रे एठी हमको only water मिलिबो सेत पई ए रिवर मान को कोआ जाय सीजनल रिवर यस नो monsoon माने कोन दैट इज ए सीजन so these are called as your seasonal rivers बुझला सो बाकी व्हाट इज ट्रिब्यूटरी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी सब कांसेप्ट हमें देखिबा काहा को डेल्टा कोहा जाय इंपोर्टेंस तो हमें चैप्टर पढिला विषय रे पढे ओके पढिला बेले हमें जानिबा बट इंपोर्टेंट एठी हमें देखि कि जानि पारुचन जे रिवर सिस्टम रो गोटे बेसिक आईडिया केमते फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया सहित सेटा कनेक्ट होची एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट ता पछरे लॉजिक कोन अछि बाकी किछि रिवर मानकर नाम मेंशन करि दउची त माने पढि दबो यस नो सो यू कैन सी हियर रिवर मानक भितरे हमें देखिबा किछि रिवर मानकर ना सो व्हाट आर दे गंगा रिवर हमें पढिबा आगु को होई नै जतले पढिबा गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र जतले हम पढिबा चैप्टर सेतले देखिबा इच वन बाय वन सिमिलरली हमें आउ कोन देखिबा पेनिनसुला इंडिया रे दैट इज द महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी and नर्मदा तापी yes or no and नर्मदा तापी so these are some important rivers तांको मानकर ना तमे कोन करबो ना मने रखिबो जोटा कि हमें जतले क्लास करिबा सेतले तार डिटेल्स रे एनालिसिस करिबा और भी बहुत सारा फैक्टर बहुत सारा इंपोर्टेंट कांसेप्ट ता विषय रे हमें जानिबा बुझला सो दीज ऑल आर द रिवर्स इंपोर्टेंट रिवर्स ऊपर हमें डिस्कशन करिबा जतले हमरा क्लास स्टार्ट हे जिवो सो आई थिंक चैप्टर 1 चैप्टर 2 भीतर ओके विषय रे तमरा गोटे क्लैरिटी आसी जाइथिबो जे हमें कहा विषय रे केमती पढिबार अछि
Clear everyone? So coming to the next chapter. So first chapter physiography of India सरला, second chapter सरला कौन the river system या फिर हमें ताको drainage system बोली कही परिया. Drainage माने कौन? Drainage जमती पानी जाए, that is the drainage. So coming to the next one. Coming to the next one. That is all about your next one. That is all about your कहाँ पर हमें discussion करिवा? Now this one, the chapter number 3. This is your chapter 3. So chapter 3 रे हमें कहाँ ऊपर discussion करिवा? ना so chapter 3 that is all about your Indian climate. कहाँ ऊपर discussion करिवा? Indian climate ऊपर discussion करिया. कहाँ ऊपर discussion करिवा? ना Indian climate ऊपर discussion करिवा. So Indian climate रो concept समस्त जानी छो. India रो climate एबे भी हमारा rainy season चली छी. That means Indian climate जितले आसी या फिर वर्षा आसुची ताको हम माइंड रे पिक्चर आइ हम बनै देचू जे सर इंडियन मॉनसून पहुंची गला. And you can see here that is the part जितरा हम देखु चंदी खाली ज्योग्राफी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से तो कनेक्ट हबनी अन्य टॉपिक सहित भी कनेक्ट हबो. Indian climate it is connected with your the monsoon budget, the monsoon budget. That means India रे केते रेनफॉल हबो जतले इंडिया ने मॉनसून पहुंची सारिबो तापरे हमें पार्लियामेंट रे कोन करिबा ना इंडियन बजट मॉनसून बजट को रिप्रेजेंट करिबा. That means गोटे पार्ट रे मॉनसून रिलेटेड टू योर इंडियन पॉलिटी सहित रिलेट होची. सेकंड हैंड रे इकोनॉमिक्स सहित भी इन्वॉल्व अछि. का सहित ना इकोनॉमिक्स सहित इन्वॉल्व अछि. जेहेतु इंडिया इज ए agrarian country. yes or no? इंडिया कोन इट इज ए agrarian country. इंडिया कोन गोटे ना सर agrarian country. इंडिया जेहेतु गोटे agrarian country से पॉइंट ऑफ व्यू रे हमें कहि परिबा India mostly depend on the rain. वर्षा ऊपर डिपेंड करिवो एंड रेन कोठी मिलिबो ना इंडियन मॉनसून रो मिलिबो. इंडियन मॉनसून रो मिलिबो. दैट मींस दैट इज द चैप्टर जोटी कि हमें पॉलिटी सहित इंटरलिंक करि परिबा, इकोनॉमिक्स सहित इंटरलिंक करि परिबा, इंडिया रो सोसाइटी सहित इंटरलिंक करि परिबा एंड इंडियन क्लाइमेट दैट इज द मॉनसून. सो इंडिया रो क्लाइमेट कोन दैट इज द मॉनसून. That is the monsoon. केमिति इंटरलिंक हबो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया सहित बिल्कुल हमें जतल टॉपिक पढिबा सेतल देखिया नॉर्थ इंडियन प्लेन जतल एक्सेस हीटिंग हबो. यस और नो कोटा ना नॉर्थ इंडियन प्लेन जतल एक्सेस हीटिंग हबो सेते बेले से अट्रैक्ट करिवो काहाकू ना दैट इज द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एंड सेटा साउथ वेस्ट जतले फ्लो हबो इंडिया को अट्रैक्ट થઈ કે આસીबो डायरेक्शन हेजबो साउथ वेस्ट. सेत पय ताको कोन को जाय ना साउथ वेस्ट मॉनसून को जाय. सो ओवरऑली हम जदी कथा हबा मॉनसून होची केते टाइप रो ना सर टू टाइप्स रो इंडिया रे मॉनसून अछि. गोटे होची कोन ना सर गोटे होची साउथ वेस्ट मॉनसून, गोटे होची नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. व्हाट इज दैट? नॉर्थ ईस्ट monsoon. So south west monsoon and north east monsoon ता विषय रे जतले हम क्लास रे पढिबा जानिबा. बट टॉपिक सब टॉपिक रो आईडिया गोटे क्लैरिटी आसी गला. आई थिंक चैप्टर नंबर 3 इट इज एनफ फॉर यू. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द चैप्टर नंबर 4. So coming to the chapter number 4. So you can see here that is the chapter number 4. Chapter number 4 is very important. कौन जीव ना दैट इज ऑल अबाउट योर दैट इज द चैप्टर नेम कौन हबो ना दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन. चैप्टर नंबर 4 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जीव जंतु. नेचुरल वेजिटेशन एंड जीव जंतु. सो नेचुरल वेजिटेशन को
इन अदर हैंड तम मानकर मेंशन करा जाए दैट इज आल्सो नोन एज योर फॉरेस्ट कौन कह जाए ना फॉरेस्ट ताको कौन कह जाए ना फॉरेस्ट कह जाए नेचुरली ग्रो हुअंती दैट मींस तमे जाई कि तदरे पानी दबार नाही ताको ग्रो करियारे तमरो किछि भी या फिर ह्यूमन बीइंग्स मानकर किछि भी अवदान न थाए सो ताको हमें कौन कहबा ना सर ताको हमें नेचुरल वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट कहि परिया सो आई नो यू ऑल आर सुपर जीनियस दैट मींस द नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रेन ओके डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल से माने कहा ऊपर डिपेंड करिवे ना रेनफॉल ऊपर डिपेंड करिवे बिल्कुल इंडियन फिजियोग्राफी एठी इन्वॉल्व हम जेतला हमें चैप्टर देखिबा सेतले जानिबा को जगह रे रेनफॉल होउची को जगह रे मैक्सिमम रेनफॉल होउची एंड को जगह रे को टाइप रो नेचुरल वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट देखाउछंदी बट यू कैन सी हियर जे नेचुरल वेजिटेशन होउची फॉरेस्ट होउची एंड रेनफॉल ऊपर से माने डिपेंड करिवे दैट मींस ओके 200 सेंटीमीटर टू अधिक रेनफॉल रेंज को नहीं की या फिर हमें 50 सेंटीमीटर टू बिलो रेनफॉल सो यही रेंज भीतर हमें डिफाइन करिबा जे को फॉरेस्ट देखा जाउछथि बुझला बट ओवरऑली एज ए एनसीईआरटी जदी हमें बेस करिबा इंडिया रे टोटल 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखा जाय सो चैप्टर रे सब सेक्शन रे सब डिवीजन रे हमें कोन करिबा ना 5 टाइप्स ऑफ डिवीजन पढिबा पांचटा डिवीजन पढिबा देसनो सो फर्स्ट डिवीजन आसीबो दैट इज द evergreen forest kana that is the evergreen forest first second division as jibo that is all about your deciduous forest kana deciduous forest clear third record asibo that is all about your thorn and shrubs just a second third re asibo thorn and shrubs fourth record asibo mountain forest fourth रे आसीबो mountain forest fifth रे कोन आसीबो ना सर लास्ट रे हमरा आसीबो दैट इज द टाइडल फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट को जाय कोन को जाय ना मैंग्रोव फॉरेस्ट को जाय मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें तो कह परिया सो यू कैन सी हियर दीस आर द टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिवीजन हमें देखिबा चैप्टर रे तो हमें खाली सिलेबस जानू नांती डिटेल्स सिलेबस रे कोन सब चैप्टर अछि जेतरा हमें इन डेप्थ रे पढिबा सेतले आपको हमें डिस्कशन करबा आज ठू बिल्कुल तमे ई नोट को खाता रे लिखि रखो तापर पॉइंट ऐड करि करि जीवो राइट साइड रे केमिति वन पेजर नोट बनिबो लास्ट टाइम रिवीजन बनिबो एवरीथिंग इज देयर बट हम सहित कनेक्ट होबार अछि चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक करियार अछि सब फ्रेंड मानक सहित शेयर करो समस्त जानंतु जे गोटे जीएस को हमें केमिति अप्रोच करियार प्रोसेस जदि जानिबार अछि इन डिटेल्स रे काली जे तमे सिविल सर्विस पर्यंत भी प्रिपरेशन रखुछ दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर दैट आल्सो सो कमिंग टू द पार्ट यू कैन सी दैट इज ऑल अबाउट और किछि कीवर्ड मेंशन कर दबा सर अपन रेनफॉल बेसिस रे डिसाइड करले जे फॉरेस्ट हमर कोन हुए ना सर क्रिएट हुए ता माने सर ए जो हम पांचटा फॉरेस्ट इंडिया रे अछि रेनफॉल को रिलेट है कि को फॉरेस्ट बनबे बिल्कुल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको सबठु अधिक मैक्सिमम रेनफॉल दरकार मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल दरकार हबो कोठी ना एवरग्रीन फॉरेस्ट रे बट सेठी हम डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप अछि बट हम जानिबा तार रेंज केते ही जिवो ना 70 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर रेंज आसीबो डेसिडियस फॉरेस्ट रे 70 सेंटीमीटर रु यस नो सिमिलरली जदि हम थ्रॉन एंड श्रब्स देखिबा जो थिर के हमको मिनिमम रेनफॉल दरकार यस नो बिलो दैन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल थ्रॉन एंड श्रब्स माने को एरिड रीजन रे देखा जिवो राजस्थान रायलसीमा एरिया से एरिया रे देखा जिवो माउंटेन फॉरेस्ट सर माउंटेन रे देखा जिवो दैट मींस इट डील्स विथ हाइट एंड आकु फर्दर तीनटा डिवीजन रे भी डिवाइड करा हिची कोन करा हिची
ना तीनटा डिवीजन रे सो हाइट बेसिस रे रैंक 1 आसीबो रैंक 2 आसीबो रैंक 3 आसीबो सो दैट पॉइंट हम देखिबा माउंटेन फॉरेस्ट रो अन्य टाइप्स भी कोन कोन अछि क्लियर को हाइट रो को माउंटेन फॉरेस्ट स्पेसिफिक डिवीजन अछि नेक्स्ट वन दैट इज द मैंग्रोव फॉरेस्ट जोटा कि डेल्टा एरिया रे देखा जाय कोठी देखा जाय ना डेल्टा एरिया रे देखा जाय आई थिंक यू हैव ए क्लियर कट आईडिया ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4 नेचुरल वेजिटेशन जाको फॉरेस्ट को जाय इंडिया रे चारि टाइप रे डिवीजन कराई केते टाइप रे ना चारि टाइप रे डिवीजन कराई यस और नो देन सर हमें देखा वाइल्ड लाइफ बट वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करिया दरकार कोन ना सर हमरो कंजर्वेशन दरकार कोन दरकार ना वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन या फिर कंजर्व करबा दरकार दैट पॉइंट ऑफ हमें कहि परिबा कंजर्वेशन बेसिस रे वाइल्ड लाइफ वगैरह जो छथि एरिया वाइज तक में तीनटा पार्ट रे डिवाइड कर छथि गोटे होची बायोस्फीयर रिजर्व गोटे होची बायोस्फीयर रिजर्व सेकंड वन होची कोन नेशनल पार्क एनपी जोटा को मु लिखि परिबी बायोस्फीयर रिजर्व बीआर नेशनल पार्क एनपी एंड नेक्स्ट वन होची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियर बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया रे टोटल ऑफिशियली 18 टा अछि नेशनल पार्क इंडिया रे टोटल 106 106 टा अछि सब जगह पॉइंट लिखि दियो आगो जतला में डिटेल्स रे टॉपिक इचु वन बाय वन डिस्कस करबा सेतले हेल्प रे हमको लागिबो ए सब जिंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केते अछि 5 6 7 5 6 7 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया रे अछंती तांकर डेफिनेशन कोन इन डिटेल्स रे पढिबा करंट अफेयर जो जो नेशनल पार्क आसीचंती बायोस्फीयर रिजर्व आसीचंती एवरीथिंग को हमें डिस्कस करबा व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हाट इज प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर व्हाट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट एवरीथिंग इज देयर इन द सिलेबस एंड हमें ताको आज वन लाइनर इन डेप्थ रे भी पढिबा क्लियर सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रो टोटल एनालिसिस हमर एते की रहिबो तारो सब टॉपिक को हमें डिटेल्स रे देखिबा आगो तापर जिबा चैप्टर नंबर 5 तापर आसीबा सर चैप्टर नंबर 5 सो यू कैन सी हियर दैट इज द चैप्टर नंबर 5 सो चैप्टर नंबर 5 कोन रहिबो तम माने जस्ट इमेजिन करो जस्ट निजे निजे भाबो चैप्टर नंबर 5 सर हमें कहा ऊपर डिस्कशन रखि परिबा सर हमरा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया सरी गला सर सेकंड चैप्टर सरी गला कोन रिवर सिस्टम थर्ड चैप्टर सर क्लाइमेट फोर्थ चैप्टर सरी गला सर दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सर फिफ्थ चैप्टर सॉइल दैट इज द सॉइल ऑफ इंडिया सो फिफ्थ चैप्टर टॉपिक रा ना होची कोन सॉइल ऑफ इंडिया दैट इज द सॉइल ऑफ इंडिया इंडिया रे जो सॉइल अछि सॉइल रा नॉर्मल डेफिनेशन कोन दैट इज द थिन लेयर ऑन द अर्थ क्रस्ट यस और नो दैट इज द thin layer okay so that is the thin layer just a second that is the thin layer above the surface of the earth surface of the earth crust clear surface of the earth crust I think you have a clear cut idea about the soil so soil ro composition kon achi what is the study of soil and what is the types of soil important se jibo kon what is the types of soil so you can see here what is the types of soil jete ame discussion kariba that is you can see here what is the types of soil what is the types of soil jota ki syllabus ro important part and soil is the combination of minerals कना ना soil minerals को नहीं की create है
and soils ro type ICAR divide करिछि and ICAR division ऊपर आमे डिस्कशन करिबा इंडिया रे टोटल इंपोर्टेंट 8 टाइप्स ऑफ सॉइल अछन केते टाइप ना सोटा सर टोटल इंडिया रे 8 टाइप्स 8 टाइप रो हमको सॉइल मिलिबो का मिलिबो ना सर 8 टाइप रो सॉइल मिलिबो कोन सॉइल हे जिवो फर्स्ट वन दैट इज द सर हमें नॉर्थ इंडियन प्लेन जो पढिले नॉर्थ इंडियन प्लेन फॉर्मेशन हेची कारण सर माउंटेन अछंती सर माउंटेन अछंती माउंटेन रो जतले रिवर जाईची से माने सर सॉइल फॉर्मेशन करिवे नॉर्थ इंडियन प्लेन एनआईपी नॉर्थ इंडियन प्लेन रे हमको टोटल कोन मिलिबो ना गोटे इंपोर्टेंट सॉइल मिलिबो जोटा कि इंडिया रे मैक्सिमम एरिया कवर करिक रखिची दैट इज द alluvial soil that is the alluvial soil clear so first आठ ता जो टाइप अछि फर्स्ट टाइप होची alluvial soil clear second type of soil that is the black soil that is the black soil third type of soil that is the lateritic soil फोर्थ नंबर आसीबो फोर्थ नंबर रे कोन आसीबो जस्ट इमेजिन भाबो को सॉइल आसीबो सर दैट इज द माउंटेन सॉइल वेरी गुड दैट इज द mountain soil fifth number रे आसीबो that is the arid soil sixth रे आसीबो alkaline soil कोन ना alkaline soil seventh रे आसीबो that is all about peat and loamy soil कौन peat and loamy soil and eighth number part रे कौन आसीबो that is the HW कौन ना होमवर्क तम मन पई पढिया जतल तो डिटेल्स रे हम जानिया बट किछि जिंस तमे तो टिके रिसर्च करो जदि मु एठी सब पढे देबी तमे ब्लाइंडली देखिबो जे सर जहा कहउछन सब नोट्स एठी मिल जाओ बट 8 नंबर टाइप रो सॉइल कोन हबो तम माने बिल्कुल मते कोन करबो ना नेक्स्ट क्लास रे जणेबो व्हाट इज द 8th टाइप ऑफ सॉइल व्हाट इज द 8th टाइप ऑफ सॉइल ठीक अछि चलो टिके इंपोर्टेंस देखि दबा को सॉइल रो इंपोर्टेंस कोन अछि ओके को सॉइल रो कोन इंपोर्टेंस अछि ओके सर हमर हेई परिबोनी सर आपण कहि दियंतो बिल्कुल सो कहि दउची सो स्टार्टिंग जेहेतु अछि त माने लिखि दिया दैट इज द रेड सॉइल कोन ना दैट इज द रेड सॉइल बट एबे हमें कोन करबा ना सब सॉइल रो गोटे गोटे कीवर्ड नबा गोटे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबा जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट रहिबो एंड तब माने जतले पढिबो भी से टॉपिक गोटे माइंड रे आईडिया आस जाइथिबो अच्छा सर एई जिंस हमें ऑलरेडी जानि छु गोटे गोटे पॉइंट सो गोटे गोटे कीवर्ड सहित हमें डील करबा सो कीवर्ड कोन रहिबो यू कैन सी हियर फर्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट योर alluvial soil it is the most fertile soil उर्वर माटी यस और नो ब्लैक सॉइल डेकान प्लेटो रे मिलिबो कोठी मिलिबो ना डेकान प्लेटो रे मिलिबो फिजियोग्राफी जतले पढिथिबा सेतले हम देखिथिबा डेकान प्लेटो कोठी सेठी हमें जस्ट इमेजिन करि पारे एंड इट इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन कहा पई भलो ना कॉटन कल्टीवेशन पई भलो लैटेराइटिक सॉइल रे गोटे ज्योग्राफिकल फेनोमेनन देखा जाय दैट इज द लीचिंग कोन देखा जाय ना लीचिंग देखा जाय लीचिंग एक्सेस रेनफॉल हबो एंड सब मिनरल्स कोन हबो ना वाश्ड अवे हे जिवो सो दैट इज द लीचिंग प्रोसेस happened here mountain soil you can see here it humus content अधिक मिलिबो arid soil रे नंबर 1 इन मिनरल्स एटा कोन हबो ना नंबर 1 इन मिनरल्स कंपोजिशन रे जदि हमें को भी सॉइल नबा 8टा
टाइप रो सॉइल धरि के हमें पहुंचीबा सर आपण कोन कोथरे मिनरल अधिक अछि ना सबुठु अधिक कोथरे अछि ना सर एरिड सॉइल रो अछि सर मिनरल जदी अधिक कंपोजिशन ऑफ मिनरल को ने कि सॉइल होछि सर एग्रीकल्चर काई कि पाउनी दैट इज ड्यू टू द पोरोसिटी जतले पढिबा से जिंस हमें जानिबा होंगी नै सो एपेठु गोटे गोटे माइंड रे ब्रॉड व्यू आसुथो सर किछि ना किछि तो लॉजिक अछि सब टॉपिक रे किछि ना किछि सर लॉजिक अछि एमिति हमें ब्लाइंडली घोसी के एग्जाम को जाई परिबानी जब पढ़ी के जिबा एग्जाम रे बहुत इजी लागिबो बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्टर भी हमें देखिबा अल्कालाइन सॉइल को के रे बोली को जाय पंजाब रे ये सुनो जो जगह रे खास करी कि तमर कोन हुए ना सर ड्रेनेज सिस्टम वेल ड्रेनेज सिस्टम नाही से जगह रे अपर पार्ट रे सॉल्ट ट्रैक रही जाय जेतले सॉल्ट ट्रैक रही जिवो ताको हमें व्हाइट कलर टाइप रो देखा जिवो जोठी कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम न थिबो से जगह रे हमकु अल्कालाइन सॉइल मिलिबो रे पंजाब हरियाणा ओके हम स्टेट रे सेठी हमकु कोन देखा जाय ना अल्कालाइन सॉइल देखा जाय पीट एंड लोमी सॉइल जोटा कि खास करी कोस्ट लाइन मानकर देखा जाय कोड देखा जाय कोस्टल एरिया रे देखा जाय and last one hochi that is the red soil कोना ना that is the red soil रे हमको आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड FeO2 रो कंटेंट मिलिबो सेत पई रेड इन कलर कोना that is the red in color so you can see here these are the total 8 types of soil in India I think you have a broad view about the Indian soil so chapter number 5 हमरा इंडियन ज्योग्राफी रो गुडे डिटेल्स रे हम देखि देले चलो जतले पढिबा वन बाय वन डिस्कस करी करी के जिबा चलो नेक्स्ट वन दैट इज द चैप्टर नंबर 6 सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6 that is the chapter number 6 what is the detail analysis of chapter number 6 को टॉपिक आसीबो that is all about your agriculture what is that chapter that is all about your agriculture that means you can see here agriculture it is a chapter sir agriculture रे हमें कोन पढिबा फर्स्ट चैप्टर ओके माइंड रे आईडिया आसीबो सेकंड जिंस होचे सर एग्रीकल्चर को हमें केमती फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया सहित लिंक करबा कि एग्रीकल्चर देखो तुमको तीनटा टॉपिक सहित इंटरलिंक होबा को पड़िबो because first priority होची India is a agrarian country first one mind रे तो आईडिया हम ऑलरेडी क्रिएट करि सारछु जतले इंडियन मॉनसून पढितलु दैट मींस सर एग्रीकल्चर पई हमु दरकार सर लैंड एग्रीकल्चर पई सर हमको दरकार वाटर सर एग्रीकल्चर पई हमको टेंपरेचर दरकार एंड टेंपरेचर कोठी थिबो ना एयर रे थिबो that means sir हमको soil दरकार हबो that means sir हमको irrigation दरकार हबो that means sir हमको temperature दरकार हबो clear so that is the part you can see here that is all about sir हमको कोन दरकार ना soil वाटर एंड एयर दरकार टेंपरेचर दरकार हबो एग्रीकल्चर सेति पे हमें देखिबा एग्रीकल्चर टाइप रे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओके व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया रो को जगह रे को टाइप रे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होची ऑल ओवर द वर्ल्ड को टाइप रे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होची तार नेमिंग वगैरह में जानिबा सिमिलरली एग्रीकल्चर पैटर्न देखिबा एग्रीकल्चर पैटर्न रे रबी खरीफ क्रॉप देखिबा रबी खरीफ एंड जेत क्रॉप देखिबा पैटर्न देखिबा यस और नो सिमिलरली हमें क्रॉपिंग पैटर्न भी देखिबा दैट मींस हमें इंपोर्टेंट क्रॉप्स ऊपर भी डिस्कशन रखिबा क्लियर इंपोर्टेंट क्रॉप्स भीतर कोन जानिबा सर इंपोर्टेंट क्रॉप्स भीतर सर राइस जानिबा व्हीट जानिबा मिलेट जानिबा यस और नो सर देन कॉटन जानिबा जूट जानिबा एक्सेट्रा को जगह रे होचंदी को स्टेट नंबर 1 पोजीशन रे अछंती इंडिया को क्रॉप प्रोडक्शन रे ग्लोबली को रैंक रे अछि एवरीथिंग इज देयर जतले पढेबा सब किछि जिंस हम जानिबा विथ ए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल भी हमें ताको इंटरलिंक करबा
खाली एग्रीकल्चर रे हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओके कल्टीवेशन पैटर्न क्रॉप विषय जानि बानी बट ता सहित हमें रिवोल्यूशन विषय भी कथा हबा दैट मींस सर ग्रीन रिवोल्यूशन हमें पढिबा ग्रीन रिवोल्यूशन विषय रे ग्रीन रिवोल्यूशन को ईयर रे आसीथिला को ओके प्रोसेस हमें फॉलो करथिलु को इंपोर्टेंट क्रॉप रहिथिला एचवाईवी सीड यूज हेतिला कि नहीं फर्टिलाइजर यूज हेतिला कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी रे जो प्राइस थिला से टाइम रे कमा हेतिला कि बढ़ा हेतिला एवरीथिंग इज देयर नेक्स्ट वन यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट पार्ट रे हम डिस्कशन को करबा ना दैट इज द ऑपरेशन फ्लड कैसा नो ऑपरेशन फ्लड ब्लू रिवोल्यूशन व्हाइट रिवोल्यूशन एवरीथिंग इज देयर सबु जिनसर वन लाइनर इन डेप्थ टिके टिके आइडिया एंड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन रे कोठू क्वेश्चन आस्तिला सबु किछि हमें डिटेल्स रे क्लास नंबर 6 एग्रीकल्चर रे डिस्कस करिबा इवन इफ लाइफ स्टॉक विषय रे भी डिस्कशन नबो कारण एग्रीकल्चर डेफिनेशन सो ऑब्वियसली तमे सब बेले डेफिनेशन जानिया दरकार व्हाट इज एग्रीकल्चर इट इज द आर्ट to cultivate a land and rearing the livestock it is called as your agriculture आपको कौन को जाए ना एग्रीकल्चर को जाए तमे एग्रीकल्चर सहित दैट मींस क्रॉपिंग पैटर्न सहित जदि लाइवस्टॉक को मर्ज करूछ इन इकोनॉमिकल टर्म आको को जाए कोन ना मिक्स एग्रीकल्चर कौन को जाए ना दैट इज द मिक्स्ड एग्रीकल्चर सो दैट इज द डिटेल्स व्यू टिके टिके आईडिया एबे हम डिस्कस करू चंदे डिटेल्स रे तो जाऊ नांती बट गोटे ब्रीफ व्यू नहीं कि ऑप्शन सो चैप्टर 6 आई थिंक समस्त नगर गोटे क्लैरिटी आसे जाइथिबो क्लैरिटी सहित कांसेप्ट भी बुझा पडुथबो जे आगु को हमें ज्योग्राफी जतले अप्रोच करिबा जो भी एग्जामिनेशन हो एबे सीएचएससीएल हाबिलदार बाहर जाइछि हंग नहीं सिमिलरली हमर एसएससी एमटीएस भी बाहर जाइछि आगु को ओडिशा स्टेट लेवल रे पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाहरिबो आरआईओ मीन आसीबो यस नो आईसीडीएस आसीबो पुलिस रो भी पोस्ट आसीबो जो भी पोस्ट आसु सेथिरे हमें ज्योग्राफी रे जहां भी क्वेश्चन आसीबो सब क्वेश्चन रा आंसर देकी आसीबार अछि से पॉइंट ऑफ व्यू रे हमरो कोन चलछि ना सीरीज को हमें स्टार्ट करिचु आई थिंक त माने समस्त हमरो माइंड रे गोटे पिक्चर आसी परथबो ठीक अछि चलो सो इटा हमर चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हे गेला चैप्टर नंबर 7 आसीबा एग्रीकल्चर परे कोन पढिबा सो कैन सी योर एग्रीकल्चर होछि कोन ना इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी यस और नो सो देन नेक्स्ट वन होछि ओके जस्ट ए सेकंड चैप्टर नंबर 7 सो चैप्टर नंबर 7 जोटा पढिबा बट प्रीवियस चैप्टर हमें कोन पढिले ना सर एग्रीकल्चर पढिले एग्रीकल्चर इट इज ए सर प्राइमरी एक्टिविटी दैट मींस इकोनॉमी से रिलेट है कि इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी बुझला इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी दैट मींस सर प्राइमरी एक्टिविटी रे कोन हुए नो स्किल नीडेड प्राइमरी एक्टिविटी रे स्किल दरकार नहीं नो स्किल नीडेड स्किल्स आर दरकार नहीं कोथरे ना प्राइमरी एक्टिविटी रे ज्योग्राफी रे चैप्टर नंबर 5 ओके 6 हमें पढिले एग्रीकल्चर दैट मींस अदर प्राइमरी एक्टिविटी वाला कोन कांसेप्ट अछि या फिर को जिंस हमें अदर प्राइमरी एक्टिविटी रे इंक्लूड करबा प्राइमरी एक्टिविटी रे तम नेक्स्ट वन आसीबा माइनिंग एंड फिशिंग चलो एते के जिंस त क्लैरिटी आसी गला दैट मींस सर जदि हमें ज्योग्राफी पढु चंदी प्राइमरी एक्टिविटी आपण कथा होउ चंदी दैट मींस हमें हिस्ट्री पढितिलु हिस्ट्री रे हमें पढितिलु दैट इज द स्टोन एज सर स्टोन एज रे
आमे कहि परिबा स्टोन एज रे पालियोलिथिक एज मेजोलिथिक एज सर नियोलिथिक एज थिला मेजोलिथिक एज रो एंडिंग बेलकू हमर स्टार्ट होची सर एग्रीकल्चर कोन स्टार्ट होची ना एग्रीकल्चर दैट मींस आमे कहि परिबा सेतले प्राइमरी एक्टिविटी रे आमे इन्वॉल्व होई सारथिलु यस और नो तापरे सर आसुची दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस इट इज ए पर्टिकुलर प्लेस इंडस रिवर सिविलाइजेशन माने कोन ना सर सिविलाइज होचंती आमे कहि परिबा गोटे डायनेस्टी या फिर गोटे एम्पायर या फिर गोटे सोसाइटी से स्टार्ट होची दैट इज द पार्ट सर इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज बोली भी कुआ जाय कोन कुआ जाय ना दैट इज द ब्रोंज एज and bronze it is the alloy काहा को नहीं की कॉपर सहित टीन को नहीं की दैट मींस से टाइम रे लोक मानक पाखरे आईडिया नथिला ओके एते डेवलप हे नथिले दैट मींस अदर हैंड से माने एग्रीकल्चर तो कले मेजोलिथिक रो एंड बेलकू बट इंडस वैली सिविलाइजेशन रे से माने माइनिंग एक्टिविटी भी सिखि जाइथिले ये सनो सेत पय ताको माइनिंग एक्टिविटी हमें कहि परिया प्राइमरी सेक्टर रे आसीबो एते डेवलप या फिर एते आईडिया डेवलप न हेले भी तमने माइनिंग करि परिबो एंड माइंस हिसाब रे या फिर हमें फ्री एलिमेंट हिसाब रे कथा हेई परिबा दीटा एलिमेंट हमको मिलिबो गोटे होची कॉपर गोटे होची गोल्ड ये सनो सेत पय हमरा फॉर एग्जांपल हमरा जेतल स्टार्ट हेतिला सिविलाइजेशन स्टार्टिंग रे स्टोन एज थिला तापरे कॉपर एज तापरे ब्रोंज एज ये सनो चारकोलिथिक एज जोटा को कहा जाय so guys here that is the part that means our next chapter number 7 एबे हमें डिफाइन करि कि जानि पारचंदी that is the mining in India so that is the mining what is that mining in India बुझि पारला so mining रे देखिबा 100 types of minerals वगैरह इंडिया रे मिले but 30 important मिनरल्स ऊपर कथा हबा माइनिंग ऊपर कथा हबा सो खास करके टू टाइप्स रा हमको का मिलबो ना मिनरल्स मिलबो गोटे होची मेटालिक सेकंड वन होची नॉन मेटालिक कणा ना नॉन मेटालिक मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सो मेटालिक भीतर भी टू टाइप्स रा डिवीजन रहबो गोटे होची फेरस कंटेंट एंड सेकंड वन होची नॉन फेरस बुझला फेरस कंटेंट माने आयरन रो भाग रहिबो एठी आयरन रो भाग रहिबोनी बुझि पारला नॉन मेटालिक माने कोन जोटा नॉन मेटालिक हमें कहि परिबा ताकू जदी हमें फोर्स अप्लाई करिबा से ब्रेक डाउन हे जिवो बुझला से कोन हे जिवो ना ब्रेक हे जिवो बट मेटालिक रे हम जतले फोर्स अप्लाई करबा सी धीरे धीरे लंबी लंबी का जंदे कॉपर हे गला गोल्ड हे गला आयरन हे गला सिल्वर हे गला ऐसा नो सो दीस आर द मेटालिक नॉन मेटालिक रे कोन आसो डायमंड आसो सॉल्ट आसो प्लास्टर ऑफ पेरिस आसीबो ऐसा नो सो दीस आर द नॉन मेटालिक सो इंपोर्टेंट 30 टा विषय देखिबा स्टेट वाइज डिस्कशन रखिबा स्टेट रे को स्टेट रे मिलुची ऐसा नो को स्टेट नंबर 1 अछंती रिजर्व रे हो या फिर प्रोडक्शन हो सब किछ हम डिटेल्स रे देखिबा सिमिलरली इंडिया रे भी पोजीशन ग्लोबल लेवल रे कोन अछि किछ किछ मिनरल्स हमें डिस्कशन करिबा सो इट इज ऑल अबाउट आवर माइनिंग चैप्टर नंबर 7 हमर कंप्लीट होची यस और नो देन कम टू द चैप्टर नंबर 8 सो चैप्टर नंबर 8 हम आसीबा सो आई कैन सी हियर दैट इज द चैप्टर नंबर 8 क्लियर सो चैप्टर नंबर 8 रे कोन आसीबो ना सर हमको मिनरल्स मिली गला प्राइमरी सेक्टर सरीला जोथरे स्किल दरकार नाही सर बे हम सेकेंडरी सेक्टर जिबा दैट मींस सर इकोनॉमी सहित आपण रिलेट करछथि बट चैप्टर आसुची हमर कहर ना सर चैप्टर हमको मिलुची ज्योग्राफी रो दैट मींस चैप्टर नंबर 8 हे जिवो दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर दैट इज द इंडस्ट्री व्हाट इज दैट वन ना चैप्टर होची इंडस्ट्री बुझला इंडस्ट्री इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड एठी तम मानकू स्किल्ड वाला पर्सन दरकार इट कम्स अंडर secondary sector clear and you need some skill एठी तुमको स्किल तो दरकार हो विदाउट स्किल तुम एठी एनरोल हेई परिबोनी या फिर जाइके जॉब करि परिबोनी दैट मींस जॉब रो प्रोफाइल जॉब तुमको एठी मिलिबो दैट मींस तुमको जॉब मिलिबो
तमे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हे पारिबो एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री रे कौन करा जाए ना एनरोल करा जाए या फिर लोक इन्वॉल्व होते बुझेला सो दैट इज द एम्प्लॉयमेंट दैट इज द पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिकल या फिर सोसाइटी स्ट्रक्चर हमें देखु चंदी बट सेम जिंस को जदि हमें इंडस्ट्री पढिबा जे ज्योग्राफिकल टॉपिक इंडस्ट्री रे अलग अलग डिविजन्स वगैरह रहिबो यस और नो सो इंडस्ट्री रे बहुत टाइप रो डिविजन्स रहिबो सो तादरे हमें डिस्कशन करिबा कोन ना आयरन इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री कॉपर इंडस्ट्री गोल्ड इंडस्ट्री क्लियर सो अलग अलग टॉपिक हमें डिस्कशन करी करी का जीवा इंडस्ट्री रे तले हमें पढिबा ताको हमें डिवीजन करी करी का जीवा बुझला सो टी इंडस्ट्री हे गला कॉफी इंडस्ट्री हे गला सो एवरीथिंग हमें इंडस्ट्री रे डिस्कस करी करी का जीवा इंपोर्टेंट होची को लोकेशन में को स्टेट रे को प्लेस इंपोर्टेंट ताको हमें मन रखिबा एंड इंडिया रा पोजीशन इंडिया रा भी पोजीशन को हमें डिफाइन करबा ग्लोबली जो हमको इंडस्ट्री रे दरकार अछि इंडिया रो रैंक या फिर एग्जाम रे पचारुची या फिर करंट रे जदि इंडिया को उथरे बेस्ट करूची ताको भी हमें कोन करबा ना मेंशन करबा मन रखिबा ठीक अछि चलो सो तापर हमें देखिबा चैप्टर 9 चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 गोटे स्लाइड रे मु मेंशन करबी सो यू कैन सी हियर दैट इज द चैप्टर 9 जस्ट अ सेकंड chapter 9 chapter 10 chapter 11 so everything is in a one slide गोटे slide रे हम डिस्कशन करिगा so chapter 10 होची 9 okay that is the transport what is that ना डिस्कस करिबा that is the transport what is that chapter na transport so transport that means hame gote jaga ru आ gote jaga को जिबा पई हेले हमको जो मोड दरकार that is the transport and इंडिया रे चारि टाइप रो ट्रांसपोर्ट मोड अछि केते टाइप रो ना सर चारि टाइप रो ट्रांसपोर्ट मोड अछि कोन कोन अछि ना सर गोटे होची रोड ट्रांसपोर्ट गोटे होची रेल ट्रांसपोर्ट what is the air transport and the next one होची that is the water transport कोन ना water transport बुझला सो इंडिया रे हमें जानचंदी रोड ट्रांसपोर्ट दैट मींस सर नेशनल हाईवे अछि स्टेट हाईवे अछि कोन अछि नेशनल हाईवे अछि स्टेट ओके स्टेट हाईवे अछि दैट मींस रोड रे हमें नेशनल हाईवे पढिबा स्टेट हाईवे पढिबा डिस्ट्रिक्ट हाईवे पढिबा लोकल रोड्स पढि जबा बट नेशनल हाईवे को ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती ताको पढिबा को दुटा ऑर्गेनाइजेशन ही अछंती सिमिलरली नेशनल हाईवे को स्टेट रे मैक्सिमम अछि ताको पढिबा नेशनल हाईवे रो नेमिंग केमिति नोमेनक्लेचर केमिति करा हिछि ता विषय रे हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा यस और नो स्टेट हाईवे को स्टेट रे मैक्सिमम अछि स्टेट हाईवे रो लेंथ ताको भी हमें डिस्कशन करिबा सो एवरीथिंग इज देयर नेक्स्ट वन दैट इज द रेल नेटवर्क दैट मींस तो माने रेल ट्रैक देखिथिबो हम नहीं रेलवे ट्रैक देखिथिबो दैट इज द ब्रॉड गज मीटर गज एंड नैरो गज तार कांसेप्ट हमें देखिबा सिमिलरली हमरा रेलवे जो अछि रेलवे रो जोन अछि सो रेलवे जोन विषय रे भी हमें डिस्कशन करिबा व्हाट आर द इंपोर्टेंट रेलवे जोन्स यस और नो रेलवे स्टेशन ऊपर डिस्कशन करिबा व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडिया रे रेलवे केबे स्टार्ट हला ता ऊपर भी हमें डिस्कशन करिबा सिमिलरली नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एबे सर करंट रे हमें देखुचंती कोठी ना कोठी एरोप्लेन क्रैश होची दैट इज द एयर ट्रांसपोर्ट रे तमर एरोप्लेन आसी जिवो हेलीकॉप्टर आसी जिवो स्पेशल किछि हेलीकॉप्टर सर्विसेस अछि कि जेतले डिजास्टर होची सेतले हमें ताको कोन करचु ना अप्लाई करूचु या फिर ताको हमें कहि परिबा तारो कांसेप्ट को कोन करा जाउची ना
स्टेट गवर्नमेंट हो कि हमर सेंट्रल गवर्नमेंट हो ताको कोन करचंदी ना लागू करूचंदी एंड लोक मानु को कोन करचंदी ना रेस्क्यू करूचंदी पवन हंस हे गला हेलीकॉप्टर सिस्टम ताको हम डिस्कशन करबा बट एयर ट्रांसपोर्ट रे हम देखिबा एरोप्लेन रो जो ट्रांसपोर्ट अछि इंडिया रे हिस्टोरिकली केबे एयर ट्रांसपोर्ट रो प्रायोरिटी या फिर एयर ट्रांसपोर्ट रो प्रोसेस फर्स्ट टाइम पई स्टार्ट हेतिला को कंपनी स्टार्ट करथिला कोठू केते बाटा जाय जायथिला एंड इंडिया रे इंपोर्टेंट एयरपोर्ट वगैरह डिस्कशन करबा इंडिया रे इंपोर्टेंट एयरपोर्ट वगैरह रो ना किछि देखिबा जोटा कि न्यूज रे थिबे या फिर हमें ज्योग्राफिकल बेसिस रे भी देखिबा तापरे वाटर ट्रांसपोर्ट सो वाटर ट्रांसपोर्ट हिसाब रे वाटर ओके हाईवे हमें कहि पारिबा नेशनल वाटर हाईवे सो नेशनल वाटर हाईवे रो डिस्कशन रखिबा केतेटा नेशनल वाटर हाईवे अछि केबेठू से आईडिया इंडिया रे डेवलप हेतिला एबे जाय कोन इंपोर्टेंट नेशनल हाईवे अछि से कहा ओके को जगह रो को प्लेस को रिवर कनेक्ट होची दैट मींस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऊपर हमें डिस्कशन करिबा जेतरा हमें पढेबा काहो करना ट्रांसपोर्ट विषय रे एंड वाटर ट्रांसपोर्ट विषय रे हमें पढिया को जिबा नेक्स्ट वन दैट इज द चैप्टर नंबर 10 मु कहि परिबी सर जेतरा हमें को भी जगह को जाउचती सर हमको एक्स्ट्रा दरकार कोन दरकार ना हमको एक्स्ट्रा किछ दरकार हेले कोन हो ना एक्स्ट्रा मिल गले हमको खुशी लागे हंगे नै बट एक्चुअल रियलिटी रे ट्रांसपोर्ट रे हम चैप्टर ही सरी जाउची बट चैप्टर नंबर 10 एंड 11 इज द ऑप्शनल इट इज द एक्सटेंडेड पार्ट बट मु तमना पई नै कि आसी डोंट वरी अबाउट दैट सो चैप्टर नंबर 10 कोन है जिवो ना चैप्टर नंबर 10 है जिवो दैट इज द पॉपुलेशन and chapter number 11 is about tribes कौन है जीवा ना tribes ओके पॉपुलेशन रे हमें डिस्कशन कौन करिबा ना सर पॉपुलेशन चैप्टर रे हमें डिस्कशन करिबा हिस्ट्री ऑफ सेंसस एंड इंपोर्टेंस देखिबा 2011 रो सेंसस ऊपर काहा ऊपर डिस्कशन करिबा 2011 रो सेंसस ऊपर तमरा सेक्स रेशियो होई गला जैसा न लिटरेसी रेट होई गला बोथ मेल फीमेल होई गला अर्बन एरिया विलेज एरिया होई गला सो एवरीथिंग इज देयर इन द सेंसस बट पॉपुलेशन अंडर रे आसी ताको हमें ब्रीफ आईडिया देखिबा पॉपुलेशन को हमें कैलकुलेट करके मेंशन करि पारे व्हाट इज अ डेवलप्ड कंट्री व्हाट इज ए डेवलपिंग कंट्री व्हाट इज ए अंडर डेवलपिंग कंट्री सो डेवलप्ड कंट्री काहा को कुआ जाय डेवलपिंग कंट्री काहा को कुआ जाय एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री काहा को कुआ जाय पॉपुलेशन रो थ्योरी बेसिस रे भी हमें डिफाइन करि पारिबा नेक्स्ट वन सर ट्राइब्स नहीं सर एते सारा टॉपिक आपण कहले हमर सब किछि बाउंस करू आउट ऑफ द सिलेबस हम बाबू किछि पढी गलु न तो बिल्कुल सो त माने जानि छ तमना फेवरेट होची सर मोर मूवी देखिया बहुत फेवरेट सो मु लास्ट ईयर रो पचारली तीनटा मूवी रो ना को तमे कहले सर तीनटा मूवी जदी लास्ट ईयर ओके 2 इयर्स बैक जिबा सर केजीएफ आसी जिबा मूवी हम नहीं कोलार गोल्ड माइंस जोडे के हमें पढिबा माइंस जेतले पढिबा कोलार गोल्ड माइंस एंड कर्नाटक रे भी सेटा अछि कर्नाटक भी नंबर 1 गोल्ड माइनिंग रे गोल्ड रा 99% ओके प्रोडक्शन कर्नाटक रे हिता से जिन सब हमें देखिबा चलो केजीएफ भी सरी गला नेक्स्ट वन सर पुष्पा झुकेगा नहीं ये सुनो पुष्पा मूवी फेवरेट सो पुष्पा मूवी रे हमें जानचंदी श्रेषाचलम इट इज द पर्टिकुलर प्लेस श्रेषाचलम जो हमर फॉरेस्ट अछि खास करी कोठी अछि ना आंध्र प्रदेश रे अछि दैट मींस सर फॉरेस्ट रे तो हमें सेटा को डिस्कस करि देथिबा आई नो यू ऑल आर वेरी जीनियस सर बट मोर फेवरेट मूवी सर मैं इंडियन ज्योग्राफी पढुचंती इंडिया यस और नो इज माय फेवरेट नेशन एंड आई लव माय इंडिया सो इंडिया को फोकस करिकी सर गोटे मूवी आइतिला ट्रिपल आर आरआरआर यस और नो बिल्कुल सो आरआरआर रिलेट हबो मूवी काहा सहित ना आरआरआर मूवी रिलेट हबो ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कारण सेतले जो हीरो थिला से को ट्राइब को बिलोंग्स होतिला या फिर को ट्राइब सहित रिलेशन तार थिला ना को ट्राइब रु से थिला ना सर गोंड ट्राइब थिला सो यू कैन सी हियर इंडिया रे ट्राइब्स पढिबा ट्राइबल पॉपुलेशन को स्टेट रे को ट्राइबल पॉपुलेशन देखा जाए एंड ट्राइबल पॉपुलेशन रे रैंक 1 2 3 एबे मन रखि दियो रैंक 1 2 3 रे की अछंदी फर्स्ट वन रे अछंदी भील ट्राइब सेकंड रैंक रे अछंदी के ना दैट इज द गोंड ट्राइब एंड थर्ड रैंक रे की अछंदी सांथाल ट्राइब क्लियर सो इट इज ऑल अबाउट योर इंडियन ज्योग्राफी रो टॉप 11 चैप्टर आरी भितर ही तम सिलेबस कंप्लीट शेष
आउ कोठु भी तुमको पढ़िया पड़बनी जो एग्जामिनेशन जाओ टीचिंग जाओ सेंट्रल लेवल एसएससी जाओ यूपीएससी जाओ ओपीएससी जाओ या फिर तुम ओएसएससी ट्रिपल ओएसएससी जाओ को भी एग्जामिनेशन जाओ सबुठी तुमको हेल्पफुल हबो एंड आई थिंक यू हैव ए ब्रीफ आइडिया ऑल अबाउट योर डिटेल सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जोटा कि मैक्सिमम एग्जाम रे पचारे एंड एई टॉपिक रो हमें किछि इकोनॉमिक्स देखिबा हिस्ट्री देखिबा पॉलिटी देखिया जता चैप्टर को इन डिटेल्स रे देखिबा स्टार्ट करिबा पढिबा स्टार्ट करिबा सेतले इंटरलिंक करिबा सो स्टोरी मेकिंग भी रहिबो इंपोर्टेंस रे हमर कोन रहिबो ना सर स्टोरी मेकिंग स्टोरी हमें बनेया बहुत जगह रे ये सन जो जिंस तमे जानि छ आरआरआर मूवी हे गला कि केजीएफ मूवी हे गला सिमिलरली ट्रिक हमें बनेबा ट्रिक्स वगैरह बहुत सारा अछि सब चैप्टर रे कोठी ना कोठी मु ट्रिक्स बनै छी एते सारा जिंस जतले पढिबा तो इजी करिया पय मु ट्रिक भी नै कि आसीबी जतले क्लास स्टार्ट होबे यू कैन रियलाइज सर बहुत मजा लागुची एंड जिंस को हमें एंजॉय भी करछु सो आई थिंक यू हैव ए क्लियर कट आइडिया एंड एठी हमें सेशन को शेष करबा आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड आगु को प्रिपरेशन केमिति रखिबा दरकार सो थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन हमें पुणी नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा ओडिशा ज्योग्राफी रे सिलेबस सो थैंक यू ऑल ऑफ यू